उन्होंने ये गाना मुझे सुनाया था कि ये एक है जो हम गुरु रंधावा के साथ कर रहे हैं। अभी तक मैं बहुत लकी हूँ। आई हैव नॉट हैड एनी अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंसेस विद एनीबॉडी इन दिस इंडस्ट्री और इन द यूएस इंडस्ट्री फॉर दैट मैटर। हाँ, मतलब डर था और अभी भी डर है। I try to put out the energy that I am here for work, and let's talk about professional things. If that's not the case, then I'll see you another time. I had a huge crush on Varun Dhawan since I was, I think, 12 or 13 years old. जब बिग बॉस में जाने का मौका मिलेगा तो जाएंगे? एक्चुअली मुझे रियलिटी शोज में इतना इंटरेस्ट नहीं है, या अभी तक वो इंटरेस्ट नहीं है रियलिटी शोज में जाने। पहले आजकल हर जगह जो हो रहा है वो सिर्फ कत्ल ही हो रहा है और गाना तो कत्ल कर रहा है, लेकिन इसमें जो डांस नंबर है ना वो कुछ ज्यादा ही कातिलाना कह सकते हैं। कह सकते हैं और वो कातिलाना कोई और नहीं बल्कि हमारे साथ है रेवती। सो हेलो रेवती। हेलो। मेनी कांग्रेचुलेशन, यू आर ट्रेंडिंग ऑल ओवर। थैंक यू सो मच। प्लीज टेल मी हाउ इज योर एक्सपीरियंस? Experience was amazing. I mean, which part of it I have to ask you? If you mean the reaction, the shoot, everything the I want to know, because what I know about is it's your debut. Yes, ये मेरा debut है। Correct? Yes. And it's all over. So मेरे ख्याल से हमको हर पहलू पे बात करना चाहिए। तो आप बताओ, आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे? आप ही बताइए कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। So it's like super hit song और सब लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। So ये गाना कैसे मिला, सबसे पहले यही बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली बॉस्को सर ने मेरा एक रील देखा था इंस्टाग्राम पे। सो मैं अप्रैल में मुंबई में आई थी और उस वक्त मैं गई थी बॉस्को से मिलने पहली बार के लिए जी। और वहाँ पे उन्होंने ये गाना मुझे सुनाया था कि ये एक है जो हम गुरु रंधावा के साथ कर रहे हैं। और उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये कॉन्सेप्ट क्या है या इसमें कौन है। तो मैंने सुना और ऑब्वियसली मुझे लगा कि ये बहुत बढ़िया गाना है और इसके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और फिर मैंने पूछा कि इसमें कौन है, क्या हो रहा है इसके साथ। एंड देन ही जस्ट सेड टू मी कि रेवती, आई थिंक यू आर गोना बी वेरी हैप्पी। ओके। एंड फिर उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि उन्होंने ऑलरेडी ये मेरा एक रील दिखाया था गुरु रंधावा को। अच्छा। एंड दैट गुरु को वो रील बहुत पसंद आया एंड ही सेड लेट्स टेक दिस गर्ल इन द सॉन्ग, वी नीड अ डांसर, वी नीड समवन हु लुक्स गुड, आई थिंक वी शुड कीप हर। And that's how it all happened. I mean, really a lucky moment, right place, right time. It was quite amazing. But आपने सोचा था कि इतना वायरल हो जाएगा and people will just call it खतल and all over is खतल? See, गाने के बारे में मैं ये बोल सकती हूँ कि I knew that it would be a big hit because you have someone like a Bosco sir, you have someone like a Guru in the song. So I knew output was going to be top notch. पर मुझे ये पता नहीं था कि I will become the face of the song, the Katal girl, that will become my trademark everywhere. So that was like a really beautiful surprise. So आपको एक कहा जा सकता है कि I mean in a positive way एक टैग मिलना कतल गर्ल जो आपने मेंशन किया। So are you liking it or what? I love it. I love it. I absolutely love it. Every time somebody says it, I feel so amazing, and I love that. That's my association. That the Katal girl, and I think लोगों ने वो डांस को इतना appreciation दिया है, तो it's amazing. And अभी तो बड़ा प्रेशर आ गया होगा कि फिर अब जो नेक्स्ट होगा वो बेटर होना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी ये गाना हिट है। सो समथिंग यू नो पीपल लुक एट इट कि ओके अगर रेवती ने ये गाना किया है और ये 100 मिलियन क्रॉस किया है तो दूसरा 150 तो करना ही चाहिए। सो व्हाट आर द प्रेप्स लाइक यू आर लुकिंग फॉर फ्यूचर? हाँ, तो अभी 2-3 प्रोजेक्ट्स है लाइनअप में। ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ लेकिन बहुत एक्साइटिंग होने वाली है और आई एम जस्ट सो एक्साइटेड टू शेयर मोर ऑफ व्हाट आई हैव टू ऑफर। आई थिंक कत्ल में बस a very small part of I think what I can bring has been highlighted and it's been highlighted beautifully. But मुझे पता है कि there's a lot more that I'm ready to show and ready to bring to the audience. So मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ and I'm not worried so much about the numbers yet because
I'm more worried about myself. Okay. कि I have to bring my best, I have to do my best, and I know that I will. So I'm just excited for things to get started and for the next one to be just as amazing as Qatal. Okay. What is your experience total about, if I ask you, how many years you have spent in the industry? Industry में मैं बिल्कुल नहीं हूँ. This is my first project. I've literally come to Mumbai 2 months ago. Wow. I've landed here in May, so I'm a very experienced dancer. Actually, my background professional dancing है. So for almost my whole life, I have trained in dancing. New York में I was a professional full-time dancer. मैं dance सिखाती थी. I would perform. I would choreograph for people. So this is a whole new chapter in my life that I'm Okay. now exploring and coming into. So what is about the New York thing? You left everything or what? हाँ, I mean, left मतलब I have come here now to pursue the next few things that are coming my way, Okay. and I hope to stay here in Bombay. That's what I'm looking forward to. हाँ. But ये भी नहीं कह सकती हूँ कि I've left New York completely. I think आजकल इतने ज़्यादा international projects हो रहे हैं that I think at some point I will circle back around and it will all connect somewhere. तो वहाँ से मुंबई आना, आई एम श्योर कोई बड़ा सपना होगा आपका जो आप कंप्लीट करना चाहती हैं. नो डाउट डेब्यू हो गया, आप सुपर हिट हो गई, सब लोग जान गए, कतल गर्ल का टैग भी मिल गया, बट व्हाट इज दैट ड्रीम जो आपको खींच के लाया? See, दिल से मैं डांसर हूँ. मैं एक बॉलीवुड डांसर हूँ. That's what I've always loved. That's what I've grown up loving. So I think US में I got amazing training from the best people, best studios. पर हमेशा I always stayed towards the Bollywood songs, Indian songs, this Okay. industry. So, getting a chance to actually do that, pursue that, which I couldn't do as much there, I think that's what really excites me. And honestly, मुझे कभी नहीं लगा कि मैं यहाँ मुंबई में आऊँगी and I will pursue all of this, which is why I started building my career on that side of the world. But somehow I think the universe had other plans and now I'm here. So I only look forward to whatever is coming next. Tell me about your struggle part. How My was it? struggle part? Yeah, how was it? Like career-wise, you wanted to come to Bollywood and Mumbai. So कितना struggle था और कभी ऐसा सोचा यार मेरा तो कोई है ही नहीं इंडस्ट्री में, so कैसे मैं मैनेज करूँगी? अभी भी ये लग रहा है. अभी भी लग रहा है. मतलब obviously 2-3 लोग हैं who are very close to me and who are guiding me and being so lovely, but मैं बिल्कुल नहीं हूँ यहाँ पे और मेरा background ये नहीं है. I come from a family of academics, of professionals, so Wow. this is completely a different space for them and for me. So every day I'm learning so much from every single person around me, चाहे it's the cameraman or the interviewer or whoever it is I'm sitting with, I'm learning from them actively. Okay. So it's a process and it's still ongoing, I think. But do you think कि इंडस्ट्री में आने के लिए किसी गॉडफादर की होना जरूरी है? नहीं, मुझे ये नहीं लगता है क्योंकि वो without that I have come here, I have shown up. I have stayed very much on the opposite end of this industry for most of my life, and somehow again just by fate, just by things working out a certain way, somebody recognized my talent and said we want to bring you in here and we want to highlight this and highlight you as a dancer. So at least from my experience मैं ये कह सकती हूँ कि godfather होना जरूरी नहीं है. And the word nepotism is quite trending. People talk about it कि जिसका बैकग्राउंड है, बैकबोन है इंडस्ट्री में, उसको बहुत जल्द काम मिल जाता है. न्यू कमर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है पहचान बनाने में. डू यू बिलीव इन दैट? तो ये सच बात है कि if you have some level of connection in the industry, it will be easier for you. Because obviously if your friend, close friend, family member has a connection, they love you, they're going to help you out any way they can. लेकिन in this era, I don't believe that is the sole reason people are getting work. We're in a very different age of media. There's so many different kinds of films, so many different types of platforms. People don't want to see the same things they wanted to watch 20 years ago. So honestly, I think for anybody entering this industry right now, it is difficult all around. It is a challenge all around. Everybody has to work hard. People may get 1 or 2 chances, but after that, everybody has to stand on their own talent and put in their own hard work. शॉर्ट टर्म में आप बिलीव करती हैं या स्ट्रगल में? मतलब कोई जैक लगा के या किसी के थ्रू जाना किसी काम के, या लेट्स गो अहेड एंड आई डू माई सेल्फ काइंड ऑफ? नहीं, बिल्कुल नहीं. क्योंकि आई थिंक एंड में that doesn't help you at all. I think struggle
करने से you learn so much along the way, and that way your success in the end is long lasting and you've built it on yourself, which is not the case when you go through shortcuts. I think for shortcuts you get the benefit for maybe, you know, a year or so. Then you have to take another shortcut to achieve the same thing again, right? So I think the best thing you can do for yourself is just believe in the process, take it slow, you know, take the challenges in your stride and keep moving. Have you ever faced casting couch of some demand or anything? नहीं, I'll say अभी तक मैं बहुत lucky हूँ. I've not had any uncomfortable experiences with anybody in this industry or in the US industry for that matter. तो अभी तक no experiences of that. बट कहीं ना कहीं डर था कि मैं जिस इंडस्ट्री में जा रही हूँ, बहुत सबके साथ नहीं होता है, बट बहुत सारे लोगों ने शेयर भी किया है, हाँ, है ना? हाँ. सो कभी ऐसा मन में डर था कि मैं जहाँ जा रही हूँ आई हैव टू बी केयरफुल और मेरी खुद की लिमिटेशंस बनानी होंगी? हाँ, मतलब डर था और अभी भी डर है. I go wherever I go with a lot of caution. I make sure, you know, if I'm going anywhere for the first time by myself, I try to have somebody, I try to have a reference, whatever it is. And I try to put out the energy that I am here for work. Okay. And let's talk about professional things. If that's not the case, then I'll see you another time. That's nice. Okay, being a good dancer, please tell me, कौन आपको इंडस्ट्री की बेस्ट डांसर लगती है, एक्ट्रेस? अभी तो I think Nora has really killed it in recent times. I think Jacqueline is also doing really well. I feel like every month she has a new hit song. But honestly, मुझे माधुरी दीक्षित सबसे ज़्यादा पसंद है. I like the classic songs. I love her classic looks. I think that she had so many beautiful expressions, so much grace. So I still always look up to her. I think as one of the top people in Bollywood. किसी एक्ट्रेस को देखकर कभी ऐसा लगा है कि मैं बेटर कर सकती थी और मुझे चांस क्यों नहीं मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं. प्लीज बी ऑनेस्ट, यू आर वेरी गुड डांसर. हाँ, मतलब शायद कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा ज़्यादा बेटर कर सकती थी, पर honestly अभी तक I've just come here and I have not been, you know, looking at things like that till this point. I've just been watching the art for what it is and having my own opinions. But I'm very happy with what I've got, and I'm excited to show my talent in what's coming my way. You know, I think there's no need to take something from somebody else because I have so much already. And I think I'll be able to show whatever I want to show in those things. अच्छा, कभी-कभी ऐसी खबरें आती है ना रहती कि जो मेन लीड्स डांस करते हैं और पीछे जो डांसर्स होते हैं, सो ऐसे पहले बहुत खबरें आया करती थी कि जो एक्टर्स होते हैं वो इनसिक्योर हो जाते हैं कि शी इज़ डांसिंग बेटर देन मी, देन शी शुड बी लाइक बिहाइंड द. ऐसा कभी आपने फेस किया है इन यूएस और यो? नहीं, खुद नहीं फेस किया है ये. आई हैव आल्सो हर्ड कि ये होता है. Honestly, personal experience से पता नहीं है. पर I hope that, you know, there's so many wonderful talented dancers in this industry who work really hard. So I just hope that they get their moment to be highlighted the way they should, and that people are everybody feels secure about what they have to offer. I think the lead has a very different role in a song. The dancers have a different role in the song. Their job is to be perfect. Their job is to have it down. The lead is meant to bring the story, bring the character to life. So I think there's nothing to be worried about in that sense. Tell me more about Guru. Guru, oh my gosh, he is such a lovely, warm person. उसने मुझे इतना comfortable feel करवाया during the rehearsals, during the shoot. You know, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये हमारा पहला project है साथ में. He was so kind, you know, talked to me as if he's just meeting a friend for the first time. I think when I met him that first day. So I think उससे ना everybody works better. When people feel comfortable, when people feel well received, the end product always turns out, you know, at another level than if the environment is cold or you feel like you can't laugh. But मुझे बस याद है कि in this whole process, I think there was just joy and love and laughter. So it was lovely. That's nice. कत्ल गर्ल का जो टैग लग गया है, हाँ. कौन से खूबसूरत हैंडसम एक्टर का कत्ल आप करना चाहोगे? It's a good question. Oh God, I think बहुत सारे हैं. बहुत सारे हैं. So many lovely handsome actors in the industry right now. I think I'll say this because it's actually true. I had a huge crush on Varun Dhawan since I was, I think,
12 or 13 years old. Okay. So shayad I'll go with him because he's like from that stage in life, one of the first people in the industry who I was like, wow. और एक ऐसा हैंडसम चार्मिंग जो भी आप कह लें आपकी नज़र में एक्टर जिसके हाथों आप खुद को कत्ल करना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक केस वेस नहीं। सबको जिंदा रहना चाहिए अभी के लिए। ओके ओके, ये जो रील का ट्रेंड है ना ये काफ़ी अच्छा है ना? और आपका तो करियर ही अभी स्टार्ट हो गया है रील से, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट शॉर्ट टर्म फेम? लाइक इफ यू सी द लेटेस्ट ट्रेंड, दिल पे चलाई छुड़िया, अगर आपने वो गाना देखा हाँ, होगा, सुनिया मैंने, हाँ। राजू कलाकार है ना, वो रातों रात एकदम स्टार बन गए बिकॉज ही इज वो पत्थर से जो वैसे बजा रहे हैं। देन सोनू निगम ने उनके साथ कोलैब किया, देन टी सीरीज केम फॉरवर्ड एंड बहुत ही अच्छा एक गाना बना। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि द शॉर्ट फेम मिलता है बट वो ख़त्म भी हो जाता है, यू नो? हाँ, आई थिंक हमारे इंडस्ट्री में एंड जनरली मीडिया में राइट नाउ देयर इज अ रेवोल्यूशन ऑफ हाउ कंटेंट इज बीइंग मेड. देयर इज अ लॉट ऑफ shorter, we have so much more vertical content, we have short form content, so things are moving in a different direction, and I guess if it works for somebody, if it helps them in their career, that's wonderful. मुझे नहीं लगता है कि I want something of that sort. I would like a longer term stay here in Mumbai. I want to do something that has a longer term impact. But I think whatever works for you, whatever your goal is, you have to fashion the way you go about things around that. So I don't believe in taking anything on thoughtlessly just because you've got a project, just because you're getting to work with XYZ. I don't think that's the way to think about it. I think you have to think about what your long-term goals are, where you want to be in 10 years, and then make your choices based on that. Okay. Acha, you're looking great and skin is Thank also you. very beautiful. Tell me, what do you do exactly for, how do you take care of yourself? I think every day my routine is getting more and more intricate. Okay. लेकिन basically I think most important चीज़ है exercise करना, रोज exercise करना, and you don't have to do anything crazy, but whatever you can do, whether that's walking or swimming or dancing or going to the gym, keeping some kind of regular routine on that front. And I believe in very simple skincare. I don't like to do too many things. I think that actually makes my skin worse. तो मैं बहुत simple रखती हूँ, और I think just trying to eat clean, trying to drink a lot of water, all the regular good things you can do for yourself, and also not putting too much pressure on yourself to be perfect. Because And good sleep, I guess. good sleep for sure. Good. I sleep a lot. Oh, more than 8 hours? If I can, yes. That's nice. आजकल थोड़ा मुश्किल है because there's so much going on. लेकिन जब मुझे टाइम मिलता है, then I love it. मतलब कत्ल ने नींद उड़ा दी है ना? थोड़ा सा, हाँ. थोड़ा सा। बट ये बताओ, इंडस्ट्री में काफ़ी ट्रेंड रहा है और बहुत लोग बात करते हैं, स्पेशली जब शेफाली जरीवाला की जो डेथ हुई ना, तो ये एक तरह से फिर से आ गया कि स्किन अच्छा और यंगर, एंटी एजिंग जो लोग ले रहे हैं खुद को यंग दिखाने के लिए। हैव यू एवर ट्राइड और एनी डिमांड यू हैव फेस्ड फ्रॉम द इंडस्ट्री? नहीं, बिल्कुल नहीं. I think I'm lucky that a lot of these things, negative things that happen sometimes have not happened to me. I haven't come across them. And honestly, I believe in science, right? So, बहुत चीज़ें हैं in the market right now that people are trying, but we don't know the long-term effects of how they're going to affect your body, how they'll affect your health. So I think it's important that to wait a little bit, take a moment, make sure the things you are putting money into, putting your health into, make sure that they are the right things for you. Be careful, because yes, it's important. I mean, yes, it's great to look nice and it's great to look good, but your health, your lifespan, way more important. ओके, सो मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि डांसिंग वांसिंग तो हो गया, एक्टिंग के बारे में क्या कहना है? कब हम देखेंगे बड़े पर्दे पर आपको एक्टिंग करते हुए? Hopefully soon, knock on wood, it will happen. Yes. पर अभी मैं खुद पे बहुत काम कर रही हूँ. I'm working on my skills. Like I said, I come from a professional dance background. So I have acted. I actually was doing live stage shows, live theater in New York. पर मैं हमेशा डांस पे ज़्यादा फोकस थी. So now I want to give energy to both things, both my dance, both my acting, and then hopefully the right things will come my way at the right time and soon. Of course. And last question. इंडस्ट्री में एक खान है जिनका नाम है सलमान खान.
Yes. वो बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं to support new talent to launch. Any contact, any desire, demand to meet him or do something with him? I mean, I think he's a huge name. Of course, anyone would love to meet him. पर अभी तक कोई contact नहीं है उनके साथ. जब बिग बॉस में जाने का मौका मिलेगा तो जाएंगे? Actually, मुझे reality shows में इतना interest नहीं है, quite frankly. Okay. I'm more interested in things where I can show my craft, whether that's acting, whether that's dancing, maybe a little bit of singing also. But yeah, अभी तक वो interest नहीं है reality shows में जाने का. चलो रक्ति, थैंक यू सो मच. Thank you so much. It was बहुत मजा आया wonderful आपसे बात meeting करके. you. Same here. Thank you. And we hope to see you again with new project. Yes, absolutely. Thank you. Thank you. Thank you.